Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. First of all, I want to say Assalamu alaikum to everyone. I hope that all of you will be fine. All of you are going very well in your life. So, guys, today we are going to discussing more important MCQs of the physics, which are very important in the paper point of FPSC, ppsc, NTS, UTS, and the most important MCQs which mostly asked in the tests of the Pakistan Air Force test, Army, Navy, Atomic Energy, Nursing and the various types of the competitive exams. So दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक फिज़िक्स के सब्जेक्ट के ऐसे एमसीक्यूज़ों के बारे में बताऊंगा और उन एमसीक्यूज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कई बार जो है वो एग्ज़ाम्स में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आ चुके हैं। तो जो बंदा भी ये सारे एमसीक्यूज़ कर लेता है या जो बंदा भी मेरी इस वीडियो को पूरा देखेगा और इन सारे एमसीक्यूज़ को तैयार करेगा तो मैं उसको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो उसका फिज़िक्स का जो टेस्ट है, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स में दे रहा है, चाहे वो आर्मी का दे रहा है, चाहे वो नेवी का दे रहा है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी का दे रहा है, चाहे वो किसी भी नर्सिंग फील्ड का टेस्ट दे रहा है या वेरियस टाइप्स ऑफ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं लाइक एफपीएससी, पीपीएससी, केपीएससी, एनटीएस, जितने भी जिस किस्म की भी टेस्ट होती हैं जिनमें फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो 2001 से लेकर 2017 तक जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और जो उनमें पूछे जा चुके हैं तो वो एमसीक्यूज़ मैं आज आपको करवाऊंगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो में मैं जितने भी एमसीक्यूज़ आपको करवा रहा हूँ आपने सबको प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो बंदा भी वीडियो को पूरा देखेगा और जितने भी एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो उनको पूरा प्रिपेयर करेगा और सारे एमसीक्यूज़ को वो तैयार करेगा तो इंशाल्लाह जो है वो उसका पाकिस्तान एयरफोर्स का जो टेस्ट है या आर्मी या नेवी में है या किसी भी तरह का जो भी टेस्ट है वो फिज़िक्स के रिलेटेड है तो वो इंशाल्लाह उसका जो टेस्ट है वो फुली सक्सेस होगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो जो कि एमसीक्यूज़ के बारे में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने सारे एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है, आपने वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि ये मेरी वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द मैं 1 या 2 दिन तक मैं इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर में पूछे जा चुकी हैं या मोस्टली जो इन पेपर्स में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो उनमें पेपर्स आते हैं या उनमें पूछे जाते हैं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ों की तरफ। दोस्तों पहला एमसीक्यूज़ है द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल इज़ इंक्रीज्ड बाय। अब देखना जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी जिस्म की जो होती है वो उसके मैस पे डिपेंड करती है। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला वो होता है एफ सी विच इज़ इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो डिस्टेंस आर होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ये लाजमी बात है कि आपको उस जिस्म का मैस जो है वो बढ़ाना होगा। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी इन अ सर्कल इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन इट्स मैस। कि अगर हम किसी भी जिस्म के मैस को बढ़ाते हैं तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो जिस्म का मैस होता है इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। अगर आप मैस इंक्रीज़ करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी, अगर आप मैस को कम करते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती है। अगले में कहता है कि आ बॉडी मूविंग इन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि वो जिस्म जो मूव तो कर रहा है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अगले में कहता है कि वन अ बस सडनली स्टॉप्स ड्यू टू व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स ड्यू टू डैश मैन रिसीव्स
एंड इम्पल्सेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ इनर्शिया। असल में ये होता है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप बस के ऊपर बैठे होते हैं तो अचानक जब बस की ब्रेक लगती है तो उस वक्त आप आगे की तरफ मूव करते हो, या जिस साइड में बस जो है वो मोड़ काट रही है तो उस तरफ आप जाते हो। ये किसकी वजह से होता है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। अगले में कहता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन, के मोशन की कितनी इकसाम है? तो सभी जानते हैं मोशन की 3 इकसाम होती हैं। इफ़ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम डैश मीटर्स हाइट इट मीट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे पेपर में एज इट आ चुका है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी 44.1। नेक्स्ट में कहता है कि लिमिटिंग फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन द रूलिंग फ्रैक्शन, कि लिमिटिंग फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा रूलिंग फ्रैक्शन से लेस देन होती है, और जो रूलिंग फ्रैक्शन होती है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रैक्शन से ग्रेटर देन होती है। व्हेन टू प्लैनेट्स डैश देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर, कि जब दो प्लैनेट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, किस वक्त ज़्यादा होती है? उस वक्त ज़्यादा होती है जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा मूव क्लोजर टू ईच अदर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी चेंज, कि किसी भी जिस्म की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस वजह से चेंज होती है? तो इसका राइट आंसर है डायरेक्टली विद बोथ मैस एंड हाइट। अब आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखें ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, कि पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है मैस और हाइट पे, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन वो किसके साथ बनेगा? डायरेक्टली विद बोथ मैस एंड हाइट, कि अगर आप किसी भी जिस्म की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको उसका मैस चेंज करना होगा या उसकी हाइट चेंज करनी होगी। अगले में कहता है कि द वर्क ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखिए ना जो वर्क डन होता है वो हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आप फार्मूले में देख सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी। द वर्क डन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द रेशियो ऑफ द आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। If we do below the center of gravity of the body then it is equilibrium, this is a stable equilibrium. If we do below the center of gravity of body then it is a stable equilibrium. नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज़ इंक्रीज्ड बाय, कि अगर आप किसी भी जिस्म की डेंसिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको उसका मैस बढ़ाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, कि डेंसिटी जो है वो मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है, ठीक है। डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि अगर आप किसी भी जिस्म का मैस बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और अगर आप किसी भी जिस्म का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। The increase in the temperature of the body in a unit mass up to 1 degree centigrade, this is called a specific heat. ये स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है कि द इंक्रीज इन अ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन अ यूनिट मैस अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, के किसी भी जिस्म का आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। इन अ पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंस। इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, कि किसी भी सर्किट में जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाइड करोगे उतना करंट ही ज़्यादा होगा, और जितना कम करोगे उतना करंट कम होगा। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, कि किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल पे भी करती है, करंट थ्रू द कोयल इस पे भी करती है, लेंथ ऑफ कोयल पे भी करती है, सब पे करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल द करेक्ट। द इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन, कि इंटरनल रिफ्लेक्शन किस वक्त होती है? जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट में कहता है कि द रेनबो इज रिजल्ट ऑफ, कि जो आपके आसमान पर जो रेनबो बनती है वो किसकी वजह से बनती है? वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से बनती है। द पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन डैश जंक्शन, कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो पी एन पी पे भी मुश्तमिल होता है, एन पी एन पे भी मुश्तमिल होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी। वेयर द इमेज इज मेड ऑन अ ह्यूमन आई, कि इंसान की आँख में इमेज है वो कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन द कन्वेक्स मिरर एंड इट्स फोकस पॉइंट देन इट्स इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन मैसेस, कि दो इजसाम
पे जो लगाई जाने वाली जो फोर्स है वो उनके मैसेज की जो प्रोडक्ट होती है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द लाइट रीच ऑन अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू द रेडिएशन, कि सूर्य से जो रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है या हम तक पहुंचती है वो किसके ज़रिए पहुंचती है, रेडिएशन के ज़रिए पहुंचती है। बीटा रेज कंसिस्ट ऑन द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा रेज जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि बीटा रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर मुश्तमिल होती हैं, और जबकि गैमा रेज जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। नेक्स्ट में कहता है कि इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ द पावर इज़ वाट। सभी जानते हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। जॉल जो है वो वर्क का यूनिट होता है, एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट होता है, वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F बराबर एम ए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, कि न्यूटन के दूसरे लॉ के मुताबिक जो फोर्स होती है वो हमेशा एक्सेलरेशन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, कि किसी भी जिस्म का जो टर्निंग इफेक्ट उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज अ फर्स्ट equation of motion of a body Vf which is equal to Vi plus At. The right statement is that At which is equal to Vf minus Vi। ये हरकत की दूसरी मसवात है कि वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी, ये इसकी सही फॉर्म है, और जो डी आंसर है वो इसका करेक्ट है, क्योंकि जब हम वी आई को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है वो बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए टी विच इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जबकि कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कि इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है। मैथ जो है ये भी स्केलर है, वर्क जो है ये भी स्केलर है, डेंसिटी जो है ये भी स्केलर है, और इसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी है वो है वेट। वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन इज कॉल्ड अ, कि किसी भी मशीन का जो मैकेनिकल एडवांटेज वो हमेशा किसके बराबर होता है, इनपुट और आउटपुट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड अ डैश लॉ, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशनशिप उसे हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड्स करती है सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ द टू प्लेट्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर में से जब चार्ज मूव करते हैं तो उस वक्त क्या प्रोड्यूस होता है, करंट होता है। इन अ मैग्नेट अपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट, के किसी भी मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। व्हेन एवर अ पीस ऑफ द मैग्नेट इज कट इनटू पीसेस, इट्स वन एंड बिकम्स नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड बिकम्स साउथ पोल, कि जब हम किसी भी मैग्नेट को काटते हैं तो उसका एक पोल जो है वो कौन सा बन जाता है, नॉर्थ, और दूसरा कौन सा बन जाता है, साउथ बन जाता है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, अब टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी बराबर है 2 पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। तो जब हम उसकी लेंथ को बढ़ा देंगे तो उस वक्त क्या होगा, जो उसका टाइम पीरियड वो बढ़ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो किस पे कंसिस्ट करती हैं, क्रस्ट एंड ट्रस्ट पे। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मिनिमम एट, कि किसी वाटर जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम होती है, और जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मिनिमम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी वो क्या होती है, मिनिमम होती है, और जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इन a reflection ray angle of the incidence is dash to the angle of the reflection is equal to the angle of reflection. If a pencil is dropped in a water, कि जब हम किसी भी पेंसिल को पानी में फेंकते हैं, इट बेंड्स इन डैश डायरेक्शन, कि वो हमेशा किस डायरेक्शन में बेंड होती है, इनसाइड अंदर की तरफ होती है। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट अ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कि वाटर की जो डेंसिटी वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और मिनिमम होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेज़र इज़ अ डैश एटॉमिक पार्ट ऑफ द फिजिक्स, कि लेज़र जो है वो फिजिक्स का क्या है, कौन सा पार्ट है, एटॉमिक पार्ट है। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ अप टू 0.01 सेंटीमीटर, देन वी विल यूज़ द वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर की मदद से हम जो है 0.01 सेंटीमीटर तक जो मेजरमेंट है उसको करेक्ट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द जी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वर्क डन ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, कि किसी भी जिस्म का जो वर्क डन होता है वो अगर उसकी मोशन की वजह से हो तो उससे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, या उसकी पोजीशन के चेंज होने की वजह से हो तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सीसा इज़ अ डैश काइंड ऑफ लीवर, सीसा जो है वो हमेशा फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर होती है, ठीक है, सीसा इज़ अ फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर।
नेक्स्ट में कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड इट इज कॉल्ड एटम्स, कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। वॉल्यूम इज अ डैश क्वांटिटी, वॉल्यूम जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। द क्वांटिटीज फॉर विच टू डिटरमाइन देयर वैल्यू वी हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि वो क्वांटिटीज जिनका हमें मैग्नीट्यूड भी पता होता है और डायरेक्शन भी पता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। एन टाइप मटेरियल्स कॉन्सिस्ट ऑफ, के जितने भी एन टाइप मटेरियल्स उनमें ज़्यादा कौन सी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। होल जो हैं वो कम होती हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। द डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मैस, कि किसी भी जिस्म की जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, मैस पे डिपेंड करती है। अगर आप मैस को बढ़ा देंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर आप मैस को कम करेंगे तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ स्ट्रेस, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ स्ट्रेस। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस, की रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप जो है ये किस पे मुश्तमिल होती है, डबल कन्वेक्स लेंस में होती है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 744 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर विच इज इक्वल टू 746 वाट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट अ केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इज 273 केल्विन। नेक्स्ट में कहते हैं कि विच कलर इज नॉट इन अ रेनबो, कि रेनबो में कौन सा कलर नहीं होता, तो वो है ब्राउन कलर, कि रेनबो में ब्राउन कलर जो है वो नहीं होता। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, time period is a reciprocal of the frequency and the frequency is a reciprocal of the time period. Every action have a reaction, this is called the third law of Newton. Displacement is dash quantity, displacement is a vector quantity. The rate of change of velocity is called the acceleration and the rate of change in displacement is called the velocity. The same poles of the magnet always repel each other. Force is directly proportional to acceleration. Kinetic energy depends upon the mass of the body. The shortest distance between the two bodies is called a displacement. The bodies floating over water are due to Archimedes. कि कोई भी जिस्म जो है वो जब किस वक्त तैरता है, कि उस वक्त तैरता है जब उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। इसी तरह जब बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती है, क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो पानी की निस्बत कम होती है। तो आर्चिमीडिस ने ये कहा था कि जिस मैस की भी जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी डेंसिटी अगर आपके पास कम है तो वो क्या करेगा, वो वाटर के ऊपर तैरेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर की निस्बत कम होगी। तो बर्फ़ भी वाटर के ऊपर तैरती है क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है पानी की निस्बत। अगले में कहता है कि पी टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ, के पी टाइप जितने भी मटेरियल उनमें ज़्यादा चीज़ें कौन सी होती हैं, होल ज़्यादा होती हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम होते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ stress. Time period is a reciprocal of the frequency. Frequency is a reciprocal of the time period. The rate of change of displacement is called a velocity. The floating of the ship on the surface of the sea is due to Archimedes. The unit of the inertia depends upon the mass. Vector have dash components. Vector have both A and B horizontal components and vertical components. The product of the velocity and the mass is called a momentum. Momentum which is equal to mv and the product of the mass and velocity, this is called a momentum. The force exerted on a machine is called the input, कि कोई भी फोर्स जो हम मशीन पे एक्सर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द करंट, गैल्वानोमीटर जो है ये सिर्फ करंट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाता है, ये सिर्फ पता करता है कि इस जगह पे करंट मौजूद है या नहीं है। और जबकि एम मीटर जो है ये करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पूछता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द करंट, कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो है एम मीटर। अगले में कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच लॉ लिक्विड एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल साइड, दिस इज कॉल्ड अ पास्कल लॉ, कि पास्कल लॉ के मुताबिक क्या होता है कि लिक्विड जो है वो तमाम साइडों पे एक जैसा प्रेशर एग्जर्ट करता है। The number of the vibrations in a unit time, this is called a frequency. This is a definition of the frequency. The number of the vibrations in a unit time is called a frequency. The waves in which the particles vibrate as a wave, this is called a transverse waves. Transverse waves वो होती हैं कि जिनमें जो particles हैं वो waves की तरह ही behave करते हैं। The magnetic lines are greater on a pole or outer. In forward circuit, the end is connected with a positive terminal. कि फॉरवर्ड बायस सर्किट में क्या होता है कि एन जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड थ्रू द बोथ ए बी, अगर आप मैग्नेट को हीट करते हैं तो उस वक्त उसका इफेक्ट खत्म होता है, जहाँ उससे आप थोड़े के साथ क्या करें, तोड़ दें, तो उस वक्त उसका इफेक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कोफिशिएंट, कि फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो हमेशा क्या होती है कि कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। व्हेन अ वायर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट मूव्स इन अ डैश डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन। रबर, ग्लास, प्लास्टिक आर अ गुड इंसुलेटर्स। The unit of the pressure is called a Pascal or a Newton per meter square. The unit of the density is a cubic meter.
Momentum depends upon a mass. In a SI system, the unit of the power is watt. The unit of the torque is Newton meter. 1 Newton, which is equal to 10 times the instrument used to measure the pressure of the air. This is called a barometer. Barometer is an instrument which is used to measure the pressure of air. Which scientist introduced the relationship between the current, voltage, and resistance? This is called ohms. Voltmeter is used to measure the voltage or a potential difference. In a friction Fs, which is equal to mu r, the unit of the charge is called a coulomb. The relationship between the stress and strain is introduced by the Young modulus. Force of the attraction or repulsion between the charged bodies is directly proportional to product of their charges. Balloons flies in the air, it is risen due to less density. Snow floats over the water, it is risen that less density. The process of distribution of light into 7 colors, this is called a dispersion. The original length and increase in length, this is called a Hooke's law. The unit of the work is called a joule. The unit of the energy is called a joule. The unit of the heat is called a joule. Arm is a first kind of lever. The time period of the body attached to a spring, this is called T, which is equal to 2 pi L over G under root. The time period of the body attached to spring कि वो body जो spring के साथ है उसका time period क्या होगा T, which is equal to 2 pi m over k under root. When light enters from denser medium to rare medium, turns dash from the perpendicular reflect. When light enters from the denser medium to rare medium, turns reflect from the perpendicular. The flight of the bird is called third Newton's law of motion. Dash is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a 1 kilogram of the body. This is called a Newton force. In a capacitor Q, which is equal to CV, capacitor dash charge. Capacitor क्या करता है वो charge को store करता है. In a centripetal force F, which is equal to m square over r. The mass of the earth is equal to 6 exponent 24. The unit of the mass in the ISI system is called a kilogram. कि ऐसे सिस्टम में जो मैस का यूनिट से हम क्या कहते हैं किलोग्राम कहते हैं. फ्रॉम विच फोर्स द अर्थ पुल्स एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर of gravity is called a weight force. The time period simple pendulum T, which is equal to 2 pi L over G square root. The number of the vibrations per second of the vibrating body is called a frequency. The rate of doing work of the body is called a power. The unit of the electric potential is called a voltage. Dash and force are directly proportional. Acceleration and force are directly proportional. In the Newton's second law of the motion F, which is equal to ma, mass and dash are represented by the equation W बराबर mg. This is called a gravitational acceleration. If temperature of the body is 100 degrees centigrade and if we heat it further, then its temperature will decrease. When the pressure of the water is increased, then its temperature also increases. The value of the G in a gravitational constant is 6.6710 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. The radius of the earth is 6.4 exponent 6. In Ohm's law, V, which is equal to IR, the trade unit of the electrical energy is called a kilowatt hour. Dash is a sensitive electric instrument that represents the presence of the current in a circuit. This is called a galvanometer. कि galvanometer जो है वो सिर्फ करंट की जो प्रेजेंस है उसके बारे में बताता है कि करंट जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है. वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ऑल ऑफ अबोव. वेक्टर को हम इन तीनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन देयर ग्राफ इज इन स्ट्रेट लाइन. If a body rotates about its axis and the remains equidistant from its axis, then its motion is called a rotatory motion. A stationary body remains to continue its stationary state and a moving body remains to continue its motion. It is called a inertia. Friction is dash force. Friction is a self-adjusting force. The tendency of a body to do work is called energy. The tendency of the body to do work is called energy. The equation which does not contain S is called equation of first equation of the motion does not contain S. Mass per unit volume is called density. Acceleration of the body depends upon the force and mass. The sum of the neutron and proton in a nucleus is called atomic number. Atomic number which is equal to sum of protons and neutrons.
Door is a dash kind of lever. Door is a second kind of lever. The product of the force and displacement is called work done. The length per unit volume and increase in length is called elasticity. The flying aeroplane has a dash points कि उड़ते हुए जहाज के कितने पॉइंट्स होते हैं 2 पॉइंट्स होते हैं डायरेक्शन के. In a Fahrenheit scale the boiling point of the water is 212 Fahrenheit degree. If P which is equal to 60 and Q which is equal to 20, then from law of the magnification which is equal to P over Q, 60 over 20, then the answer will be 3. Alpha rays consist of the positively charged particles and the beta rays consist of the negatively charged particles and the gamma rays are neutral. 1 kilogram which is equal to 1000 grams. In total reflection angle of the incident and the angle of the reflections are equal. In norm the force depends upon the fulcrum. The central distance of the two crusts is called a wavelength. Simple harmonic motion depends upon the time period. The number of the basic units are 7. In an international system of the unit length, mass, time, electric current, temperature, light, strength of the light and the unit of the quantity are called basic units. Current is a dash quantity, current is a scalar quantity and the current density is a vector quantity. Scissor is a dash kind of lever, scissor is a fast kind of lever. In a simple pendulum, if m is mass and the k is a spring constant, then its time period is equal to t, which is equal to 2 pi m over k ka square root. The unit of the capacitance is called a farad. Current is a dash quantity, current is a scalar quantity and the current density is a vector quantity. Gamma rays consist of the gamma rays are a neutral and the beta rays are a negatively charged particle and the alpha rays are a positively charged particle. The number of the derived units are 7. The distance covered in a unit time of the moving body is called a speed. In an international system of the measurements, the value of the g which is equal to 9.8 meter per second square. The quantity of the matter in a body is called a mass. The ruling friction is always greater than the limiting friction and the limiting friction is always less than the ruling friction. The unit of the friction is dash which is equal to Fs. The Newton's first law of the motion is also called the inertia. The quantities for which we need their unit and the magnitude are called the vector quantities. The quantities for which we need only magnitude is called scalar quantities. A transparent body whose 3 sides are rectangular and the 2 sides are triangular is called a prism. Dash is a side device which can be explained by the total internal reflection is called a mirage. Whenever light enters from the denser to rear medium and the angle of the incident and the angle of the reflections are equal and the forms 90-degree angle with each other, then it is called a critical angle. In a nucleus, the number of the protons are called atomic number. The emission of the radiation from the nucleus is called radioactivity. If atomic number of an atoms are same but their masses numbers are different, then they are called isotopes. Hydrogen has 3 isotopes. The speed of the light is 3 exponent 8 meter per second. In n-type materials, the free charges are called electrons. The thin portion of the transistor is called emitter. In the sun and the other stars are a fusion reaction. According to quantum theory of the light, photons of the lights are emitted in the form of the packets of energy. Concave mirrors are used as a dash in telescope dahane. Light is a form of the energy. In a concave mirror, if a body is placed between the focus F and the pole 2P, then its image will be formed on a back. At 4 degrees centigrade, the density of the water is greater and maximum. Heat is a form of energy. On heating the body, the increase of the body is called longitudinal strain. To travel sound from one place to another place, this is called a medium. In 3 states of the matter, less distance of the molecule is in gases.
Dash is also a periodic motion. To and fro motion is called a periodic motion. Dash is an instrument which makes work very easy. Machine is an instrument which makes work very easy. The ratio of the weight and force is called a mechanical advantage. If we disturb a body which is in stable state, then its dash becomes higher. Its center of gravity becomes higher. The energy of the body due to its motion is called a kinetic energy, and the energy of the body due to its position is called a potential energy. Simple harmonic motion have dash characteristics, all of above. Dash is an example of the simple machine. Pulley is an example of the simple machine. The waves produced in the air due to vibrating body are called the waves, transverse waves. The velocity of the sound at a normal temperature pressure dash meter per second. This is a 336 मीटर पर सेकंड कि साउंड की जो स्पीड वो कितनी होती है 336 मीटर पर सेकंड होती है. G is called the gravitational constant. Dash is a vector quantity. Torque is a vector quantity. The velocity of the sound is dash then the velocity of the light. The velocity of the sound is always less than the velocity of the light. If we reduce the frequency of the vibrating body, then the pitch of the sound produced will becomes less. In a longitudinal wave, the distance between the two troughs is called a wavelength. The waves in which the direction of the vibrational motion of the particles of the medium is perpendicular to direction of the motion of the waves are called a longitudinal waves. The longitudinal waves consist of the crust and troughs. The magnetic lines of the forces can pass from air easily than the glass. The magnetic lines of the forces can pass from the air easily than the glass. To measure current, ammeter is connected in a series. 1 mega ohm, which is equal to 10 raised to power 6. The non-conducting materials have a less number of the free electrons. 1 milliampere, which is equal to 10 raised to power minus 3. The magnetic lines of the force do not intersect. Dash revolves around the nucleus in their orbits, free electrons. The lightest particle in an atom is a electrons. In a Coulomb's law K, which is equal to 9 exponent 9 Newton. The unit of the capacitance is called a farad. In a capacitor, dash is used between the plates as a medium. This is called a dielectric. If we pass the electric current in a wire, then dash is produced in it electric field. Similar poles of the magnet always repel each other, and the opposite poles of the magnet always attract each other. If in a wire current is flowing from above to below, then the direction of the lines of the forces will be clockwise direction. The change galvanometer into ammeter resistance is connected with the galvanometer. This is called a series. If a current is passing through the solenoid, then the north pole of the solenoid can be determined with the help of the right hand rule. The relationship between the electric current and the magnetism was introduced by the Oersted. The region around a magnet from which the effect of the magnet can be detected, this is called a magnetic field. The electrons present in every last orbit of an atom are called valence electrons. The density depends upon mass. The centripetal force is directly proportional to the mass. The distribution of the vectors into its two or more than two vectors is called a resolution of the vectors. To add vectors, we kept in mind their direction. The rule of the head to tail rule is used for addition of the vector. Mass is dash quantity, mass is a scalar quantity.